Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I'm bringing you a quick DIY that I love. So everybody's always asking me what should we do for our blackheads, and one of my favorite things to do at home that really works each time, it's like my brightening exfoliator at home, and it also gets rid of blackheads. So अगर blackheads का आपको issue है, आप चाहते हैं कि आप कुछ घर में फटाफट बना के actual real results पा सकें, so this DIY is amazing. It's one of my favorites. I'm so excited to share with you. Blackheads are some of the most common skin issues that we have, and I see all the time on my brides, on my party makeups, people who come to get their makeups done, nose पे होंगे, chin पे होंगे, आपके T-zone पे काफ़ी होते हैं. Or this scrub is like, I used to love the Dermalogica ka gentle skin exfoliant, and this is like my at-home gentle skin exfoliant, only that it's even better because of the ingredients that we put. It's just 3 ingredients. I love it. You will love it. So can't wait to show you guys how we're going to do it. So this right here are the ingredients. So first I will show you. This is the rice, जिसका मैंने rice का powder बनाया है घर पे, और ये मसूर दाल है जिसका हमने फिर से पाउडर बनाया है, और ये है दही. ठीक है. नाउ आई विल शो यू हाउ वी गोना गो अबाउट मेकिंग इट. सो ये रहा हमारा राइस पाउडर जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखाया था. दिस इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स फॉर लॉट्स ऑफ माय डीआईवाईज. तो इसको घर में ग्राइंड करके अपने एक बोतल में रखती हूँ. मैं बहुत सारे डीआईवाईज में यूज करती हूँ. इट्स एन एक्सीलेंट एक्सफोलिएटर, हैज सो मेनी बेनिफिट्स फॉर द स्किन, really works well. और ये जो मसूर की दाल का पाउडर है, this is just again I'm just surprised at how well it works on blackheads. I love it. So this is my other secret ingredient in this DIY scrub that I love. It's like it becomes exactly like the gentle exfoliant that I use from Dermalogica, only better. अब तीसरा ingredient जो है, ये मैं गिराना नहीं चाहती गिरना जाए, ये योगर्ट है. अब योगर्ट, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, इट डिपेंड्स. कुछ लोगों की जो एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं. मेरी स्किन ऑयली है, एज यू कैन टेल. अभी मेरे मुंह पे कोई मेकअप नहीं है और मेरी स्किन ऑयली है क्योंकि मैं इसको लगाती हूँ. मेरी स्किन अब टॉलरेट करती है बिकॉज आई वर्कड ऑन माई स्किन, इट डजंट रियली रिएक्ट, तो मैं यूज़ करती हूँ. पर अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन स्पेशली है, तो आप इसकी जगह पानी यूज़ कर सकते हैं. और जिनकी स्किन ड्राई है उसके लिए ये बेस्ट है. यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड यूज़ द योगर्ट. you'll see such a big difference. और ये जो स्क्रब है, ये सिर्फ ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए नहीं है. दिस इज़ अ ग्रेट स्क्रब फॉर ऑल्सो ड्राई स्किन. अब ड्राई स्किन पे लोग कहते हैं कि स्क्रब नहीं करना चाहिए बिकॉज यू नो स्किन ऑलरेडी ड्राई है. पर ऑफ कोर्स हमेशा पैच टेस्ट करें, स्पेशली DIYs किसी भी प्रोडक्ट के साथ पैच टेस्ट करें. मगर जो ड्राई स्किन होती है उसके ऊपर भी एक ड्राइनेस सी, स्केलीनेस सी फॉर्म हो जाती है. अगर आप उसको स्क्रब नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो व्हाट्स गोना एंड अप हैपनिंग कि जो आप अपना मॉइस्चराइजर और हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट स्किन पे लगा रहे हैं तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, विच मीन्स के स्किन विल कीप बीइंग ड्राई इवन इफ यू पुट गुड प्रोडक्ट्स ऑन. तो स्क्रबिंग एंड अ जेंटल एक्सफोलिएशन इज की. अब ये मेरा साफ प्याला है, इसके अंदर अब मैं डालूंगी. अब जो आपने प्रोडक्ट बनाना है, इसको मैं बॉडी के लिए बनाती हूँ. बॉडी के लिए भी एक्सीलेंट स्क्रब है. जिनको हैंड्स पे लग रहा है ड्राइनेस हो रही है, डार्कनेस हो रही है, फीट पे, बॉडी पे, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इट्स एक्सीलेंट. अभी मैं सिर्फ अपने मुंह के लिए बना रही हूँ, तो मैं पहले डालूंगी 1 टीस्पून. मेरा टीस्पून का साइज ज़रा रेगुलर टीस्पून से बड़ा, ज़रा हीप टीस्पून. 2 हीप टीस्पून मैंने डाले राइस पाउडर के. अब मैं 2 डाल रही हूँ मसूर की दाल के. अब मैं थोड़ा सा योगर्ट लूंगी. पहले मैं 1 और ये रहा 2. जो कंसिस्टेंसी आपने बनानी है वो ऐसी हो कि रनी भी नहीं हो और ज़्यादा वो भी ना हो, लाइक थिक. It has to be somewhere in the middle. So I'll just show you. We need to add some more yogurt in there. कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है. ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए. अब now I'm gonna apply it on my face. आई विल अप्लाई इट. अब जो मैंने मास्क बनाया है वो मैंने अपनी नेक, चेस्ट सबके लिए बनाया है, जो मैं इधर कैमरे पे आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, बट अभी मैं आपको फेस पे लगा के दिखाऊंगी. एंड यू विल नोटिस दैट दिस इज जस्ट ऑलरेडी फीलिंग सो ग्रेट. एंड यू कैन टेल कि एक तो स्क्रब भी हो रहा है, एंड यू कैन नोटिस मैं जो मोशन है मेरे हैंड्स का, वो मैं बहुत जेंटल ही रख रही हूँ. ज़्यादा स्क्रब नहीं करना हमने, like harshly scrub नहीं करना. Now you can take it to your lip also.
It's literally food, so even if it goes a little in your mouth, it's not pleasant, but it's not nice to taste, but it's great as a lip scrub also. I'm really excited to share this one with you because I know you guys will really like it. Especially जब आपका T-zone है, वहाँ आपने अच्छी तरीके से इसको स्क्रब करना है. It works with rose water or water well as well. जो दही अवॉइड करना चाह रहे हैं उसकी सब्स्टिट्यूट वाटर भी हो सकती है और ऑर्गेनिक रोज वाटर भी हो सकता है. And now after, can you see how well it has scrubbed my pores? So right now I just put gloss on my lips. I have had very dry lips for the last God knows month, only Lord knows why. But yeah, as you can see, this is right after the scrub. I have some scrub in my hair. Just washed it off. So this is amazing. I'm so excited to hear कि जब आप लोग use करेंगे कि आप लोगों को कैसा लगेगा, because this immediately gets rid. Can you see how nice and shiny my nose is? And immediately gets rid of any blackheads that I have. It works so well. Or another thing you can do is maybe apply it initially for like 3 to 4 minutes. Make sure that you let it be there and then scrub it off. That also really works. But ye mera one of my favorite totkas for blackheads, for like getting rid of like any kind of sebum etc on the face. It's also a great like brightening scrub. Or my makeup se pehle bhi I really like to use it because I feel like it gives a nice like smooth surface for the makeup. So let me know if you guys enjoy. Please try it. I want you to try it and tell me in the comments. I know you guys will love this. I know you love my DIY oils, other DIYs that I've shared with all of you. तो अब बहुत सारे DIYs मैं वापस लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स में कि कौन से DIYs आप देखना चाहेंगे. And like, share, and subscribe to the channel. We're about to hit 200,000 subscribers, and hopefully, inshallah, next 500,000 and then a million. So please keep subscribing. It motivates us to make more videos, more content, and also keep telling us in the comments what you would like to see. I know there have been some issues with the audios in some of my last videos. We're really sorry. We shot the content and then realized कि जो videographer थे जो video ले रहे थे उन्होंने सही recording ही नहीं की थी, तो edit में हम उसको save नहीं कर सके. I'm very very sorry. A lot of you said that you wanted to watch those videos, you couldn't enjoy them because of the audio, so we're sorry. We're taking your feedback and we shall be bringing you lots more videos with great audio, so you will not have that problem. So please like, share, and subscribe, and keep telling me what you'd like to see. Lots more content coming up, and I'm going to see you very soon.